he stood for. I am sad the way the Indian forces dealt, with the family last night. The way his house was encircled, the way they forced the family to bury him without a proper funeral. Everybody knows that there would have been a huge namaz-e-janaza for him, and the Indian forces were too scared to even allow that. We talk of fundamental rights. This is a basic right, a fundamental right, and the way it has been trampled, it saddens me. I am very disturbed since last night. When I got the news and I heard this, I am very upset, and I am sure every Pakistani and every Kashmiri is feeling this way. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैयद अली गिलानी साहब आज हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी महक जो है पूरी वादी में, कश्मीर की वादी में हमेशा वो उनकी महक रहेगी। उनकी अज़मत, उनका किरदार, उनकी इस्तेकामत एक दास्तान है, मशले राह है, और वो कश्मीरी जो इस जद्दोजहद में सरे फहरिस्त हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ रहनुमा असूल तय कर दिए हैं। मुझे यकीन है कि नौजवान नस्ल तजदीद अहद करेगी और उस मिशन को जारी रखेगी। With this, let me revert to what you have organized today, Azad Sahab. Let me begin by congratulating the host for organizing a session on such an important issue. We are witnessing momentous events in the neighborhood which have far-reaching implications for the region and the international community as a whole. The situation demands following a carefully calibrated policy to avoid pitfalls and achieve what we have been pursuing for the last many years: a stable, peaceful and prosperous Afghanistan. Before I highlight the salient points of our policy on Afghanistan, a few comments on the current situation will give an idea on our policy. The international coalition pursued a military approach to achieve peace in Afghanistan for 2 decades, which I don't think was based on ground realities. Insistence on military solution brought the political process to a head. The Doha Peace Agreement brought a new hope for the Afghanistan leaders. Unfortunately, intra-Afghan negotiations made little headway. The absence of an Afghan-led and Afghan-owned negotiated political settlement, coupled with withdrawal of international forces, created a whole new set of challenges and opportunities for Afghan leadership. The lack of resistance by the Afghan security forces and the speed of Taliban's takeover of Kabul have surprised the international community. Ladies and gentlemen, since taking over, Taliban have made a series of announcements on general amnesty, protection of women's rights, freedom of speech, employment and access to education, and openness to an inclusive political dispensation. Taliban are in talks with Afghan leaders on the future political setup. We wish them success. However, the situation as it stands today is fragile.
The unfortunate loss of more than 170 lives in two dastardly attacks by ISIS near Kabul airport is a grim reminder of fragility of situation. More than ever, the situation demands Afghan leaders to exhibit wisdom. It also requires sustained engagement by international community as shared responsibility to help Afghanistan on its path to peace, stability and prosperity. Failure is no option. Ladies and gentlemen, Pakistan was the only country that consistently maintained that there was no military solution to the Afghan conflict. Pakistan, with its firm belief in a negotiated political settlement, supported the US-Taliban direct talks leading to intra-Afghan negotiations. We also continue to voice that the withdrawal of international forces should have proceeded in tandem with progress in the intra-Afghan negotiations. We also supported a responsible and orderly withdrawal to ensure smooth transition. We have suffered the most after Afghanistan, both in terms of casualties and huge loss to the economy. No other country has a greater interest in peace and stability in Afghanistan than Pakistan. Continuation of conflict and instability in Afghanistan is certainly not in our interest. We consider all segments of Afghan society important in the overall construct of Afghanistan. Every Afghan, be it from Tajik community, Uzbek or Turkmen or Pashtun, they all are part of a beautiful mosaic. We reached out to all ethnic communities to reiterate our support to a united and peaceful Afghanistan. In the present circumstance, we have continued our support for an inclusive setup in Afghanistan as the best way forward. We consider Taliban's announcements positive and encouraging. The Afghan leadership should take the responsibility of delivering. दूसरी जानिब शेख रशीद तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ये खिता बहुत अहम होने जा रहा है। इस रीजन में पाकिस्तान पर अहम जिम्मेदारियां आने पड़ने वाली हैं और पाकिस्तान ने पीस का एक रोल किरदार अदा करना है। उसमें पाकिस्तान एक कॉरिडोर है और उसमें इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है। कैपिटल जो होते हैं, सारी दुनिया की नज़र उस पर होती है और मीडिया भी सारा जो है पाकिस्तान में, जो भी मीडिया का आदमी काबुल से तुरखम पहुंच जाए या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच जाए, हमने 10,000 लोगों को कमोबेश एंट्री दी। 9,000 लोग वापस जा चुके हैं, 700-800 अभी यहीं मौजूद हैं। और जो जर्नलिस्ट आना चाहे, जो IMF, वर्ल्ड बैंक, इन तंजीमों के वाबस्ता लोग या इन एम्बेसियों से काम करने वाले लोग, एम्बेसियाँ उनको स्पॉन्सर करें, तो हमें, हमारे दिल बड़े हैं, हमारे दिल खुले हैं। लेकिन एक अहम बात यहाँ कह रहा हूँ, मुमकिन है कि आज हमें चमन का बॉर्डर कुछ देर के लिए बंद करना पड़े। थैंक यू वेरी मच। अभी करना, हाँ, सबसे अहम बात जो है, मुझे इससे इब्तिदा करनी चाहिए। आज दुनिया का एक बहुत बड़ा अजीम इंसान सैयद अली गिलानी साहब ने शहादत का रुतबा पाया है और हिंदुस्तान में जबर इस्तबदाद और गज़ब और जुल्म सितम के ख़िलाफ़ जो आग और खून की होली कश्मीर में खेली जा रही है, उन्होंने आखिरी दम तक उसकी लड़ाई लड़ी। सारी पाकिस्तानी कौम उनको खराज अक़ीदत पेश करती है। आज हमारा परचम भी सरनगू हैं और हम एक दिन उनका सोग मना रहे हैं सारे पाकिस्तान में उनकी शहादत पे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह सैयद अली गिलानी को के दर्जात बुलंद करे और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में उनकी शहादत भी बहुत बड़ा किरदार होगा। और सारी ज़िंदगी उन्होंने असूलों पर और सारी ज़िंदगी उन्होंने सच्चाई और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए लड़ी। मैं उनको सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ।